बड़ा गठबंधन हो तो सभी पार्टियों में विमर्श होता है और उसके बाद तय हो जाता है। मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है और सभी दलों का चल रहा है, लेकिन बहुमत के साथ जीतना है और जितना अच्छा समझौता उतने अच्छे परिणाम, और मुझे लगता है इस दिशा में हम सब बहुत आगे बढ़ गए। हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। असली बात तो यही है सीट शेयरिंग का। तो सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। अर्थशास्त्री है वो, पूरा दुनिया में आपने देखा है कि इस तरह का अगर किसी भी अर्थशास्त्री से बात कीजिएगा तो ये डेस्परेशन है उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, बुरी तरह हारने वाला है, तो ये बौखलाहट में इस तरह का वो बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। और जो हम लोग देख रहे हैं लोगों का मिजाज, अब तो हम लोग चले आए, नॉमिनेशन शुरू हो गया, लोगों का मिजाज बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये सब जब डिस्परेशन तब होता है जब खुद पता चल जाता है कि ग्राउंड पे कुछ बचा नहीं, यही है। ये तो पूरे बिहार के लोगों को दिख रहा है, पूरे बिहार के लोगों को दिख रहा है। सीट का शेयरिंग नहीं है, भ्रष्टाचार करने का शेयरिंग है कि कौन ज़्यादा लूटेगा, किसका ज़्यादा मंत्री बन जाएगा, किसको ज़्यादा ठेका मिल जाएगा, किसको ज़्यादा लूट का हिस्सा मिलेगा, उसकी लड़ाई है। और वो स्वाभाविक है, चलेगी, अभी कई दिनों तक चलेगी, क्योंकि बिहार उनको मालूम है कि भाई एक बार हम अपना गठबंधन वगैरह बना के आ जाएंगे, फिर जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। कोई जात के नाम पर बिक जाएगा, कोई हिंदू मुसलमान बन जाएगा, कोई 5 किलो अनाज के लिए वोट दे देगा, कोई 500 रुपये के लिए वोट दे देगा। लेकिन अगर ये लोगों ने किया तो मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि भाई तब अगले 5 साल भी इसी कुव्यवस्था में जीने के लिए तैयार रहना, फिर दोष किसी को मत देना। So with elections nearing, Bihar's political action has shifted to Delhi. Top leaders from both the NDA and opposition camps are now in the capital. JDU leaders Sanjay Jha and Lalan Singh are in Delhi for final seat talks. Lalu Prasad Yadav, Tejasvi Yadav and Rabri Devi are also headed there today. In NDA, seat sharing is largely settled. BJP will contest 101 seats, JDU 102 and Chirag Paswan's LJP are 26. In the opposition camp, disagreements persist. RJD wants Tejasvi Yadav declared as the chief minister face. Congress is demanding 60 seats. So we have Aman Sharma with us live, CNN News 18's Aman. Aman, could you please tell us how crucial is this meeting of Rahul Gandhi between Lalu and Tejasvi? Well, yes, Sukanya, see, all the big leaders of Patna of various parties are now in Delhi to sort out the seat sharing in the last lap. What is happening in the opposition camp, if we come to that first, Tejasvi Yadav, Lalu Yadav and Rabri Devi all are leaving Patna for Delhi today, because tomorrow in Delhi there is also the hearing, their court hearing in the land grab case in which they have been made accused by the investigating agencies. But today they are expected to meet Rahul Gandhi in Delhi because the seat sharing in the opposition is stuck, because last time the Congress had contested 70 seats. This time the Tejasvi Yadav wants them to contest not more than 52 to 55 seats, while the Congress party, I am told by leaders here, is demanding a minimum of 60 seats. That is why the JDU, Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi will have this very important meeting expected in Delhi today. Also, the other two allies, the left parties and Mukesh Sahani's VIP, also have big demands. Mukesh Sahani of VIP wants 40 seats, also him to be declared the Deputy Chief Minister's face. Left also wants 25 to 30 seats. So how this delicate balancing will be done by the RJD and the Congress together remains to be seen. RJD, interestingly, Mr. Lalu Prasad also wants Tejasvi Yadav to be declared the chief ministerial face officially when the seat sharing is also made official. That's another key demand of the RJD. So let's see what happens on the opposition front. In the NDA camp, Sukanya, there doesn't seem to be much differences now between the JDU, BJP and Chirag Paswan. Those three seem to be settled. The JDU could contest 102 or 103 seats.
the BJP could contest 101 or 102 seats, while Chirag Paswan has been convinced to fight 26 seats in the upcoming elections. The original demand was about 40 seats, but they have brought him down to now 26 seats. What is happening in the NDA camp is that leaves only about 13-14 seats for the likes of Jitin Ram Manjhi and Upendra Kushwaha together. Both of them want more than 7 seats. That is what is being thrashed out in the NDA camp. Yesterday, both Mr. Upendra Kushwaha and Jitin Ram Manjhi had long meetings with the BJP President JP Nadda. Today, we are expecting some clarity to come on the seat distribution formula inside the NDA ahead of the all-important BJP CEC meeting in the evening, which will be chaired by Prime Minister Narendra Modi at 6:30 p.m. Remember, the first phase nominations have to be filed by October 17th, and it's already October 12th, and no nomination has been filed so far by any of the leading parties. So time is at a premium. Everything which has to be decided either today or tomorrow, and by tomorrow we would know what is the seat distribution formula. But there is one possibility, Sukanya, that in the opposition camp, there might be contest between the opposition candidates also, because if the Mukesh Sahani's party puts up 40 candidates, they may be taking on RJD candidates in some seats. So there could be things could get really complex in the Mahagathbandhan camp, while in the NDA camp, I believe by afternoon or evening today, things will be much clearer and settled. Aman, so basically this prolonged uncertainty that we have noticed in the election so far, which has been clear to a certain extent now, but do you think that could give the BJP an upper hand, a slight upper hand, or could prove advantageous for the party in the Bihar elections? See, Sukanya, I feel that the BJP has handled these negotiations better. You know, the JDU was very, very clear that it is the BJP's job to convince the other 3 allies, and senior BJP leaders like Dharmendra Pradhan, who is the election in charge of Bihar, has camped here in Patna, spoken to all the parties, Vinod Tavade as well. Now JP Nadda and Mr. Amit Shah are there in Delhi speaking individually to all these alliance partners also. So the BJP camp still looks more sorted to me than the opposition camp. In the opposition camp, there doesn't seem to be much meeting of minds. It is only today that Rahul Gandhi is now back, and Rahul Gandhi is meeting Tejasvi Yadav in Delhi to thrash out the final formula. But there seems to be a lot of wrangling inside the opposition camp. Yes, this I believe gives an advantage to the NDA camp, because there in NDA there will be no contest between the allies, which could be a very big possibility in the Mahagathbandhan. So that's why I feel the NDA camp looks more sorted, and by evening today, I am assuming that the NDA seat sharing formula will be final. The tickets could come either earlier this night by the NDA camp or tomorrow morning, because as I said, the time is hardly any time left. Just 4 days left for nominations to end for the first phase, and just a week left for nominations to end for the second phase. So parties need to get into their act and hurry up. Otherwise, it could they need to declare these tickets, because candidates who are probable are also getting restless to file their nominations. Right. Thank you, Aman. Thank you so much. So, a 4-hour drive from Patna leads to Konar village in Rohtas district, the birthplace of Prashant Kishore. Locals recall his journey to becoming PK, the politician. Watch this special report by Aman Sharma from Konar. Driving 4 hours out of Patna brings you to the Konar village in the Rohtas district, and this is the Janam Bhoomi of Prashant Kishore. This is the house behind me, which belongs to his late parents, Dr. Shrikant Pandey and Sushila Pandey ji, who built this house, and this is where Prashant Kishore grew up and went on to study later in Buxar, and then went on to become a political strategist, and now is a full-time politician running his party, Jan Suraj, which is making its electoral debut in the state of Bihar. But these are his roots, and this house is where, as I said, he grew up, and his parents, especially the people, the locals here, speak very fondly of his father, Dr. Shrikant Pandey, who was a famous physician here, who did a lot for the people of this area, and locals say he instilled the same values in his son, Prashant Kishore. We are with a group of residents of the Konar village where Prashant Kishore was born. This is his ancestral house. His parents are no longer alive, but this is the house where he was born, and his, as we say, the Pushtani Haveli is very much here. We have caretaker who live here. As you can see, Jan Suraj poster. In fact,
inside as well and outside as well. तो प्रशांत जी यहीं पैदा हुए, माता पिता उनके बड़े यहाँ पे नाम रहा उनका, थोड़ा बताइए उनके बारे में। प्रशांत जी का जन्म करहगर में हुआ है। उनके पिताजी डॉक्टर थे करहगर में, और हुए इनका जन्म हुआ है जी। कुनार भी उसी विधानसभा में आता है जी, और जन्म उनका करहगर में हुआ है जी। तो ये घर उन्हीं का है यहाँ पे? ये घर उन्हीं का है जी। उनका पिताजी का बनाया हुआ है। उनके बाबा जो हुए वो बहुत गरीब तबका के थे, बैलगाड़ी हाँकते थे। वो डॉक्टर को पढ़ाए लिखाए, डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ गए तहाँ प्रशांत जी गए और जिस सरकारी स्कूल में विद्या हासिल किए और इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं जी। अब तो बहुत आगे पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स, अब तो राजनेता बन गए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार में। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा इलेक्शन तो में? अपने को नेता घोषित नहीं कर रहे हैं कि हम नेता नहीं हैं, तो नेता नहीं बनेंगे। उनको लालसा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बने चाहे कोई विधायक एमपी बने, क्योंकि विधायक एमपी और मुख्यमंत्री बनकर जितना पैसा कमाया जाएगा उतना पैसा, उतना अधिक पैसा कमा कर खर्चा कर दिए बिहार के विकास खातिर। तो मुख्यमंत्री बनकर क्या किया जाएगा, पैसा क्या होगा? ये अपना बाल बच्चा परिवार छोड़कर इस मुहिम में लग गया है कि बिहार का शिक्षा सुधरे, बेरोजगारी दूर हो, गरीबी मिटे, स्वास्थ्य बढ़िया हो, इस मिशन में लगे हुए हैं। तो पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं है। पैसा कमाना उद्देश्य तो अब तो इतना पैसा खर्चा करे कि उससे बेसी पैसा कमाया नहीं जा सकता है, और वो मिशन में है, नेता बनने के लालच में नहीं है और कोई पोस्ट लेने के लालच में नहीं है। बिहार की जो कास्ट पॉलिटिक्स है बड़ी ही जटिल होती है, तो कास्ट पॉलिटिक्स में समय लगता है 1-2 इलेक्शन में उसको पूरा रिजल्ट लाने में। आपको लगता है पहले इलेक्शन में रिजल्ट ला सकते हैं? सर नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आज हमारे बिहार के युवाओं के चमकते उम्मीद हैं। रही सीट की और वोट की बात, तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो अपने पॉकेट में वोट रख के लड़ता है। वोट तो जनता का अधिकार है जी, जनता का उद्देश्य है और जनता का सपना है कि नहीं हमारे बिहार के चमकते सितारे पर प्रशांत जी को बनाना है, तो ज़रूर अधिक से अधिक सीट कामयाबी हासिल करेंगे। नीतीश जी इतने समय सीएम रहे, 20 साल से, प्रशांत जी ने उनके साथ काम भी किया, तो नीतीश जी को अब क्या रिटायर करना चाहिए? प्रशांत जी तो यही कह रहे हैं। उम्र तो हो ही गया है, उम्र हो गया, उनका सूझबूझ खो दिए हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री आए हैं, वहाँ अटल जी का नाम ले रहे हैं, झंडा फहरा है वहाँ थप्पड़ी पीट रहे हैं, औरत है उसको साल उड़ाते हैं। तो ये दिखा रहा है कि ये एकदम बूढ़े तो हो गए हैं, अब इनका मानसिक संतुलन खो दिया है। ऐसा आदमी से बिहार नहीं चलेगा, इनको हट जाना चाहिए अपने से इज्जत बचाकर। प्रशांत किशोर एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचार का नाम है प्रशांत किशोर। शरीर छोड़कर आदमी चला जाएगा लेकिन विचार जीत रहेगा। जैसे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, ये लोग चले गए लेकिन इनका विचार आज भी अमर है, आज भी जीवित है। उसी तरह प्रशांत किशोर का एक विचार है, विचार का नाम प्रशांत किशोर है। ये रहे या न रहे लेकिन इनके विचार हमेशा अमर रहेगा। Complex caste politics of Bihar, it is difficult for a new player to make its mark in the very first election, especially when that party is contesting independently outside the traditional alliances. Well, Prashant Kishore and its party, the Jan Suraj party, is trying to change that traditional logic in Bihar because it is saying it is contesting this election beyond the caste barriers. Chirag Paswan in the last election also tried to fight alone but could not win a single seat, though he really damaged the JDU and brought down the JDU's vote tally. So will Prashant Kishore also go the Chirag Paswan way by not winning many seats but damaging one of the major principal players and impacting this election in a big way? Or will he be able to win the number of seats to become the kingmaker in the Bihar elections? Only time will tell, but Prashant Kishore surely has stirred the pot in Bihar. People are talking about him, but it remains to be seen if he's the rising sun of Bihar's politics or another leader who promised much but could not achieve what he was really aiming for.